And ingrained with rich values and various beliefs, India is known for its diverse religions and unique traditions. For centuries, the Sufi saints and gurus of India have dispersed the message of peace and harmony among diverse religious communities. Their followers have faithfully absorbed their message and endeavour to maintain the secular fabric of the nation. The Dargah of Hazrat Jiyauddin Chisti in a small village of Gujrat is the manifestation of this unity between different religious communities of India. Take a look. Communal harmony is a required facet for maintaining peace and tranquility in a multicultural and diverse society like India. Examples of the peaceful and harmonious coexistence of various cultural and religious denominations can be easily spotted in different nooks and corners of the country. One such example is the shrine of Sufi saint Hazrat Jiyauddin Chisti, which has served as a cynosure of communal harmony for generations. Located about 70 kilometers away from Surat in a tribal village called Kumkotar, the shrine of the Sufi saint is thronged by a large number of devotees every day from across the nation, irrespective of their religion. मैं कम से कम 15-20 साल से आता हूँ हर संडे को और यहाँ कौमी एकता को भी इधर झगड़ा नहीं हुआ सब एकता के साथ है और 80-90% लोग हिंदू लोग आते हैं और 10% मुसलमान लोग आते हैं इतना श्रद्धा से आते हैं कि आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ इधर। फर्स्ट टाइम आया उससे पहले मेरी बहन आई थी 3 साल पहले तो उनकी मुराद पूरी हो गई है तो उन्होंने बताया कि जोरावर पीर है चिकली के आगे उधर से 10 किलोमीटर चिकली से तो ये दरगाह अच्छी है सब मतलब सब मुरादें दुआएं कबूल हो जाती है। यहाँ पे सब लोग आते हैं मेरे पापा पूरी फैमिली आई है अपनी भी मुरादें लेके आते हैं सब और अभी क्या ईद का त्यौहार है इसके लिए वो खुशी में सब लोग आए सब मुरादें पूरी दुआएं कबूल करने के लिए। Hazrat Jiyauddin Chisti or Jorawar Peer is regarded as one of the greatest Sufi saints who throughout his life spread the message of Sufism and peace. People of different faiths attend this shrine in large numbers on Thursdays and Sundays and offer their praise to the saint to perpetuate his teachings of oneness and communal harmony. It is believed that saint fulfills the wishes of all and nobody returns empty-handed from here. मैं बहुत पहले से छोटा था तब से आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिलता है और एक अपनापन एहसास होता है। यहाँ पे आने की वजह यह है कि मन को बहुत शांति मिलती है और मेरे जो कोई भी मन्नत रखता हूँ या फिर कोई भी दुआ करता हूँ तो मेरी कबूल होती है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं और सबकी दुआएं कबूल होती है मन्नत भी पूरी होती है। Since ages, the Sufi saints like Hazrat Jiyauddin Chisti have propagated the message of spiritualism and harmony in our country, and their teachings are still playing a significant role in strengthening the threat of secularism.